Hello everyone, good morning students. Today we will start our next exercise, exercise 4G, adjoint of matrices. What is adjoint of matrices? Adjoint of matrices is the transpose of cofactors. The transpose of in last exercise we have already done how to find cofactors, and in third chapter we know how to find ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप किस तरह करते हैं रो नू कॉलम च चेंज करके, ठीक है जी, उन्होंने बोलते हैं ट्रांसपोज। एंड वट इज़ को फैक्टर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड माइनर्स एंड then find cofactors. Now adjoint of matrices, what is adjoint of matrices? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਈਨਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਏ। ਦੈਨ ਮਾਈਨਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। Example 1, let us take A, B, 1, 2, 3, 4. This is your A matrices. A matrices. So first of all find minors M11, first row, first column, left the element is remaining element is 4. M12, first row, second column 3. M21, second row, first column left, the remaining element is 2. Second row, second column, the remaining element is 1. Now to find cofactors, A11 is 1 plus 1 is even, so minor as it is आ जाता सी अपने कोल। 1 plus 2 is odd, जे odd आंदा सी then की हुंदा सी, साइन चेंज कर देंदे सी। So 2 1 is 2 plus 1 is 3, 3 is odd, so here is -2. And A22 is 1, 2 plus 2 is 4, and 4 है तो तुहाडे कोल ईवन नंबर है, सो ईवन नंबर है तो एज इट इज़ आ जाता है कोफैक्टर, ठीक है जी। माइनर द सेम। हुण तुसीं की करना है, एडजॉइंट करना है। एडजॉइंट नूं डिनोट किस तरह करते हैं बच्चे, ADJ डॉट कैपिटल ए, एडजॉइंट ऑफ ए बोलते की है, एडजॉइंट ए, या तुसी एडजॉइंट ऑफ ए भी कह सकते हो, और यू कैन से एडजॉइंट ए। ये डिनोट करते हैं इस तरह अपन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, पहले एलीमेंट्स लिखो, फर्स्ट रो के किहड़े एलीमेंट्स से 4 -3 -2 1, इहदा ट्रांसपोज, आ ट्रांसपोज का साइन है तुहाडे कोल, सो इहदा ट्रांसपोज कर दो 4 -3 -2 1। दिस इज़ योर एडजॉइंट ए, योर आंसर, ठीक है जी। लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, that A B C D, so ABCD है अपने को एलिमेंट्स मैट्रिस। हाँ जी, M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेफ्ट, रिमेनिंग एलिमेंट इज D. M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम C, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इज B, and second row second column is A. So now cofactors are A11 is equals to D, A12 is equals to -C, 1 plus 2 is 3, 3 is odd number, then we have to change the sign of minor. Here is positive C and we have to change sign, so A12 is negative C, A21 is -B, A22 is A. So adjoint A is equals to D minus C minus B A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ट्रांसपोज करना है आप D minus C minus B A. दिस इज़ योर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x3 ऑर्डर द क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1. So we have to find adjoint of A. So find the cofactor minors. M11 is equals to first row first column left, the remaining determinant is 3 0 5 1, and solving this 3 into 1 is 3 minus 5 into 0 is 0 3. Here the cofactor is A11 is 1 plus 1 is odd, A1 plus 1 is 2, so 2 is even number. ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਈਨਰ ਐਂਡ ਕੋ ਫੈਕਟਰਸ। ਸੋ M12 ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ ਫਸਟ ਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ, फर्स्ट रो second column 2 minus 2 5 1. So this into this 2 minus minus plus minus एक ऑलरेडी फॉर्मूले वाला माइनस अपने को की आ गया जी 12. So minus minus plus this is 12. So A12 is 1 plus 2 is 3. 3 even odd number है जी, odd number आ जाए तो आप की माइनस का साइन चेंज कर देंगे minus 12. Next M13 first same as it is, first row third column, first row third column left. So here the remaining determinant is 2 minus 2 3 and 0. This is 2 into 0 0 minus minus 6. So 0 plus 6 is 6 and A13 is 6. M21 is equals to second row first column. Second row first column, the remaining determinant is 1 2 0 1. Minus 1 into 1 minus 0 into 2 is 0. So answer will be minus 1 and A21 is 2 plus 1 is odd. So odd number है तो साइन चेंज हो गया, कोफैक्टर की आ गया तो कोल 1. M22 is equals to second row second column, the remaining second row second column left, the remaining determinant is 1 minus 2 2 1. 1 minus 2 2 1 and 1 into 1 is 1, minus 2 into 2 is minus 4, so here is plus 4. This is 5 and cofactor is M22 is 5. Now M23 is equals to second row third column 1 minus 2 minus 1 0. 1 minus 2 minus 1 0. So 1 into 0 is 0 minus minus 2 into minus 1 is 2. माइनस माइनस की हो गया प्लस 2 हो गया. सो माइनस एज इट इज़ फॉर्मूले वाला आ गया. तो कोल की आ गया जी माइनस 2. सो A23 2 plus 3 is 5. 5 इज़ ऑड नंबर जी, ऑड नंबर है तो आप की करते हैं साइन चेंज करते हैं. सो M31 इज इक्वल्स टू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लीव किया आप 1 3 2 5 आ गया जी. So minus 1 into 5 is minus 5 minus 6. This is minus 11 and A31 3 plus 1 is 4. So 4 is even number as it is minor आ गया अपने को. M32 third row second column. So third row second column, the remaining determinant is 1 2 2 5 and third row third column, the remaining determinant is 1 2 minus 1 3. Now solving this 5 into 1 is 5 minus 4 1 आ गया जी. So A32 3 plus 2 is 5. 5 is odd number, so साइन चेंज हो गया अपने को की आ गया minus 1. 3 minus minus plus 2 is equals to 5. So A33 is 5. Now एडजॉइंट की सी जी अपने को
what is adjoint A? It is the transpose of cofactors. पहला cofactors note करो as it is 3 minus 12 6, 3 minus 12 6. Next cofactors 1 5 2, 1 5 2. Next minus 11 minus 1 5. ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼. ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਰੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਸੋ ਫਸਟ ਰੋ ਇਜ਼ 3 minus 12 6. ਨਾਓ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 1 5 2. ਨੈਕਸਟ minus 11 minus 1 5. ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਆਂਸਰ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਏ. ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ. ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਦੋਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਏ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਏ ਅਪੋਨ ਏ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ. this is the formula of A inverse, or you can say 1 by A determinant into adjoint. It's the same thing. Denominator not equals to 0 आएगा ताई A inverse exist करेगा अपने कोल. ठीक है जी. when A inverse only exists when A determinant is not equals to 0. ਜੇ ਇਹ 0 ਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਇਨਵਰਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ. ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜੇ. ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਆਊਗਾ, ਫਰਦਰ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਏ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਏ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ the question of inverse of matrices. So here let us take the question. So A is equals to 2 minus 3 minus 4 7. Find A inverse. So first of all ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ. ਜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਹੋਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ A ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, 2 into 7 minus 4 into minus 3. So here this is 14 minus 4 3s are 12. So 2 is not equals to 0. This implies A inverse exists. भी A inverse की अपने को exist कर गया. So जे A inverse exist कर गया, find करने लिए की करना है, कोफैक्ट माइनर्स कढ़िए पहला M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लैफ्ट किया, एलिमेंट की बचे थोड़े को 7. M12 फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम लैफ्ट किया, एलिमेंट बच गया अपने को -4. सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम द रिमेनिंग एलिमेंट इज -3. So second row second column the remaining element is 2. So here the cofactors are A11 is equals to 7, A12 1 plus 2 is odd numbers, 1 plus 2 की ये 3 है, 3 odd number है जी, odd number है तो आप की करते साइन चेंज कर देने. ठीक है जी. M similarly A21 is also changing the sign -3 to 3. A22 is equals to 2. Hence adjoint A is equals to transpose of cofactors. So here this is 7 4 3 2 transpose, and adjoint A is equals to 7 4 3 2. Here is your adjoint A. This implies A inverse is equals to adjoint A upon A determinant. So here A determinant is 2. A determinant is 2 and the adjoint A is 7 4 3 2. This is your answer. Next एक 3x3 ऑर्डर ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ. A is equals to 2 1 3 4 minus 1 0. So -7 2 1. First of all find the determinant of A. So plus minus plus 2 as it is,
फस्ट रो दे कंपैरेटिव एक्सपैंड कर रहे हैं आप लॉन्ग। सो फस्ट रो फस्ट कॉलम लीव किया, बाकी रिमेनिंग डिटर्मिनेंट इज -1 2 0 1, सेकेंड -1, so first row second column left, the remaining determinant is 4 -7 0 1, plus 3, first row third column left, the remaining determinant is 4 -7 -1 2. Now solving this, we have -1 into 1 is -1 -0, -1, 4 into 1 is 4 -0, plus 3, 4 2 ज़ा 8, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, फॉर्मूले वाला माइनस अपने को एज इट इज़ आ गया -7. सो हेयर -2 2 एज इट इज़, सो -1 -0 इज़ -1, -1 into 4 plus 3 into 1, so -2, here this is -4 plus 3, -6 plus 3 is -3, -3 is not equals to 0. Now to find minors, M11, M11 first row first column, -1 2 0 1, first row first column left, बाकी remaining determinant we will write. So here this is -1 -0 is -1, so M12, similarly M12 is first row second column left, 4 -7 0 1. So this is 4 into 1 is 4 -0, the answer is 4. M13 first row second third column, first row third column left, the remaining determinant is 4 -7 -1 2. As it is determinants note कर लेने हैं first of all अपन M21, so second row first column left, second row first column left, the remaining determinant is 1 3 2 1. M22 second row second column left, the remaining determinant is 2 -7 3 1, 2 -7 3 1. Next M23 second row third column, second row third column left, the remaining determinant is 2 1 -7 2, 2 1 -7 2. Now M31 third row first column, so third row first column left, the remaining determinant is 1 -1 3 0. Next M32 third row second column, third row second column, 2 4 3 0, 2 4 3 0. Next M33 third row third column, so the remaining determinant is 2 4 1 -1. Now solving this into this, 4 2s are 8 -7, here is -7 into -7 -1, so this is positive 7. So नेक्स्ट अपने को फॉर्मूले वाला माइनस आ गया, सो 8 -7 इज़ 1. नेक्स्ट 1 into 1 is 1 -6 is -5, 2 into 1 is 2, minus plus, so plus 21, here is 23. This into this, 2 into 2 is 4 plus 7, so 11. Next 1 into 0 is 0, minus plus 3, so here is 3. Next 2 into 0 is 0, -12, here is -12, -2 -4 is -6. So now find the cofactors. cofactors ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, i plus j ਦਾ ਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ odd ਬਣਦਾ ਹੈ, then we have to change the sign of minor, otherwise if it is even, ਜੇ even ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, minor as it is ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. So 1 plus 1 is 2, 2 is even number, so here cofactor is as same as minor, so A12. Now 1 plus 2 is 3, so 3 is odd number, now changing the sign of minor, -4. A13 is 1 plus 3 is 4, so as it is आ गया जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ cofactor. A21 2 plus 1 is 3, now changing the sign of cofactor, 2 2,
2 plus 2 is 4. So as it is 23, A23. 2 plus 3 is 5. Now changing the sign of M23. And this is here is 3 1, 3 plus 1 is 4. So 4 as even number है, so even number as it is अपने कुल किया गया 3. A32. Now we have to change here sign. A33 is minus 6. So now adjoint A is equals to transpose of cofactors. Now write the cofactors: minus 1, minus 4, 1, 5, 23, minus 1, 11, 3, 12, minus 6. Transpose. Now write the transpose of the matrices: minus 1, minus 4, 1, 5, 23, minus 11, 3, 12, minus 6. Here is your answer. Sorry, this is your adjoint A. Now A inverse is equals to adjoint A upon A determinant. So A determinant is minus 3. So 1 upon minus 3, and adjoint A is minus 1, minus 4, 1, 5, 23, minus 1. So 3, 12, minus 6. This is your A inverse. Now let us start the next topic of this exercise. Here you have matrices A is equals to 1 2 2, 2 1 2 and 2 2 1. So you have to prove that the equation is prove that A square minus 4A minus 5I is equals to zero matrices. Just wait. Now using this find A inverse. First of all बच्चे ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ find A inverse क्या है, so if equation given नहीं है then as it is ਤੁਸੀਂ अपना formula लगा सकते हो A inverse ਦਾ adjoint A upon A determinant. But here when equation is given then using this, so equation ਨੂੰ use करके ਤੁਸੀਂ find करना है A inverse. So just let's start. First of all equation ਨੂੰ ਕੀ prove करना है ਆਪਾਂ? 0. O means zero matrix. Zero matrix means भी उस matrix का हर element की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 है. So let us start. Firstly we will have to find A square. So write A square is equals to A into A. So A is 1 2 2, 2 1 2, 2 2 1. Again we have to write A 1 2 2, 2 1 2, 2 2 1. So multiplying these two matrices, हाँ जी multiply third chapter च कीता सी ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ? First row first column. So 1 into 1 is 1 into 1 plus second element ਨੂੰ second ਨਾਲ, first row first column. ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ row ਨੂੰ ਹਰੇਕ column ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ first row ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ columns ਨਾਲ, first column ਨਾਲ, second column ਨਾਲ, third column ਨਾਲ. So I repeat, second row ਨੂੰ ਵੀ again थर्ड तीनों कॉलम्स नाल करने एंड थर्ड रो नू भी 1 by 1 आप तीनों कॉलम्स नाल करने. सो हेयर वी विल फाइंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट नू फर्स्ट नाल प्लस सेकंड एलिमेंट नू सेकंड नाल 2 into 2 प्लस थर्ड एलिमेंट नू थर्ड नाल 2 into 2. नाउ आई विल राइट डायरेक्टली. सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 2 is 2, सेकंड एलिमेंट नू सेकंड नाल कीता 2 into 1 is 2 plus 4. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 2 is 2 plus 2 into 2 is 4 plus 2 into 1 is 2. Second row first column 2 into 1 is 2 plus 1 into 2 is 2 plus 2 into 2 is 4. Second row second column 2 into 2 is 4 plus 1 into 1 is 1, so 2 into 2 is 4. Second row third column 2 into 2 is 4 plus second element nu second nal kita 1 into 2 is 2 plus 2 into 1 is 2. Third row first column 2 into 1 is 2 plus 2 into 2 is 4 plus 1 into 2 is 2. So third row second column 4 plus 2 plus 2
third row, second, third column, 4 plus 4 plus 1. So here you have 1 plus 4 plus 4 is 9. Here is also 9, here is also 9. So this is 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8. So here the equation is a square minus 4a minus 5i. So now we have to prove this equation will be zero matrix. So a square is 9, 8, 8, 8, 9, 8. So here is 8, 8, 9. And minus 4 into a. So a is 1, 2, 2, 2, 1, 2. So 2, 2, 1. Minus 5 into I. I is identity matrix. So what is identity? Here is 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Identity matrix is that matrix whose diagonal elements is 1 and the other elements will be 0. So now a square is as it is 9, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 9. Minus 4 into a is. So multiply every element with 4. 4, 8, 8, 8, 4, 8. So 8, 8, 4. Minus 5 into I is. So 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5. Now solving these. So here is 9 minus 4 is, I solve first two matrices. So 9 minus 4 is 5. 8 minus 8 is 0. 8 minus 8 is 0. Next 0, 5, 0, 0, 0, 5. Minus next matrices as it is 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5. The answer will be 0 matrices. 0 matrices. So 0, 0, 0, 0. Hence proved. So hence proved. Now we have to find A inverse using this equation. A square minus 4a minus 5i is equals to O. 0 matrices. So now how to find A inverse from this equation? Firstly, we will have to multiply both sides by A inverse. Multiply both sides by A inverse. So here is A inverse into A square minus 4a minus 5i is equals to A inverse into O. Now this implies you can say inverse into A square minus 4a inverse into a minus 5a inverse into a is equals to 0. 0 मैट्रिक्स के नाल किसी भी मैट्रिसेस ਨੂੰ मल्टीप्लाई करांगे that will be 0. So here is you can write a inverse into a. into a मैं ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a square ਨੂੰ ब्रेक कर लिया जी. a square ਨੂੰ ब्रेक करके ਕੀ लिख लिया a into a minus 4 as it is a inverse into a as it is. Sorry, here is I, identity, minus 5 A inverse into I. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ समझो. सो A into A inverse is identity ਹੁੰਦਾ. हाउ यू कैन राइट A inverse 1 by A. A कैंसल हो जाएगा. बचिया कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਕੀ ਹੈ 1. 1 in matrices ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈਡੈਂटिटी. ठीक है जी. दिस इज योर रिजल्ट. A inverse into A. Either you can A inverse into A or A into A inverse is identity. Second result is A inverse into identity is A inverse. Identity ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? Identity elements ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 ਹੁੰਦੇ ਆ. ਸੋ 1 ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ. ਸੋ ਹੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ A inverse into A is I into A minus this is again I minus A inverse into I. A inverse into I is A inverse. मतलब ਆਈਡੈਂटिटी ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ that will be always identity. Now you have देखो A into I. A into I is
A आइडेंटिटी नाल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी. So here is 4i is equals to, you can write माइनस नेगेटिव सी उधर जाके की हो गया पॉजिटिव 5 A इनवर्स. सो A इनवर्स की वैल्यू इथों फाइंड कर दो. A इनवर्स इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट 1/5 A माइनस 4i. So put the values of A and 4i. A is 1 2 2 2 1 2 2 2 1 minus 4i is 4 0 0 0 4 0 0 0 4. Now solving this, we have 1/5. 1 minus 4 is minus 3. 2 minus 0 is 2. 2 minus 0 is 2. 2 minus 0 is 2. 1 minus 4 is minus 3. 2 2 2 minus 3. This is your A inverse. If you like my video, then click the like button and subscribe and share the video. Thank you, students.